Bangladesh and India are back in Shere Bangla, and so are we back to discuss about the second ODI. And definitely, it is going to be a do or die for India because first match India has already lost. So Bangladesh is 1-0 in this series so far. Second match के लिए हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं. Toss हो चुका है. Bangladesh has won the toss and opt to bat first. और मेरे साथ discussion के लिए I have Aditya and Vignesh with me. Welcome, gentlemen. We are here to discuss about this match, but first I'll start off with what has been a part of debate for so many fans of these days. Like we all know कि year रोहित शर्मा के लिए काफी खराब रहा है और like in terms of the way he has played and also the way he has captained. एशिया कप नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए, and afterwards ये सीरीज का पहला मैच हम हार गए. बट ऐसे में चलते में लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रोहित शर्मा की कैप्टेंसी. सो आई स्टार्ट ऑफ विद दिस कि is it like really considered as a bad year for Rohit Sharma or something that has to put a question on his captaincy? I'll start with Aditya this one. Yes, I feel Rohit Sharma has had a tough time as a captain. As a group, or BCCI gave him and the coach Rahul Dravid all the can say leeways to make experiments, to get the team ready for the World Cup or even Asia Cup. All the experiments were done. Yes, there were a few unfortunate injuries, but in hindsight, they had the team they wanted for the World Cup as well. And even they got the break after the World Cup. And when it came to the first ODI in the last game, there were a few questions raised about the captaincy as well. Yes, the results have not gone the way apart from the bilaterals. The results have not gone India's way and Rohit Sharma's way as well. But it won't be right now to, I would say, remove the change the captain in hurry, because we have a World Cup in around less than 11 months. So it would be better to keep the team stable and then go ahead with the same captain. Right. And Vignesh, what are your thoughts on this? Do Rohit Sharma needs to take a break from that captaincy? Yeah, I don't think there's a break required, because with the World Cup in the line and it's about seeing the bigger picture, for Indian cricket. I think at least till 2023 World Cup, the 50-over format, it's a big World Cup, and it's a home World Cup for India. And as host, I think Rohit Sharma should be back to take to in the captaincy role. And as well, again, it's about sticking to their basics, basically backing a core, and they have backed a special amount of players with this consistent. And if they move forward with Rohit Sharma, I think it's going to be a good opportunity for India to change everything in the coming year. With, I know it's been a tough year for Indian fans as well as Rohit Sharma, but I think it's going to turn around very soon. And it's about just chopping in just one win, two wins, and so it's about carrying the momentum forward. So I think the wins are going to come, and I think Rohit Sharma is going to bloom in 2023. Right, and after the toss, we have got Bangladesh have got one change. Nasoom is playing and Hassan Mahmood is not playing. The boys are pumped up for this contest as well, concluded by Liton Das. Rohit Sharma ने यहाँ पर एक ऐलान किया है कि Akshar Patel is back in the 11 for this match. So we are going to have at least one all-rounder who is known for his good skills, especially in Asian continent. I'll start off with the head-to-head of this conversation, as we all know कि इंडिया और बांग्लादेश की जब भी बारी आती है तो हेड-टू-हेड के जो नंबर्स हैं ये कुछ और ही कहानी बयान करते हैं. यहाँ पे इंडिया है 130 मैचेस, बांग्लादेश ने 6 मैचेस जीते हैं, ओवरऑल 37 मैचेस खेले हैं और एक का नो रिजल्ट रहा है. आदित्य, लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन ओवर इट कि नंबर्स यहाँ पर कुछ और कहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ओडीआई फॉर्मेट, सो बांग्लादेश ने अपने आप को काफी हद तक प्रूव किया है अगेंस्ट इंडिया कि नंबर्स चाहे कुछ भी कह रहे हो, बट वी आर बेटर देन देम एटलीस्ट उनकी खुद की कंडीशन में. यस, अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब इंडिया ने टूर किया था बांग्लादेश को 2015 में, उस टाइम भी वी हैड लॉस्ट 3-0, एंड एट होम बांग्लादेश हैज कम अप एज अ वेरी गुड टीम, especially in ODIs. Not only in home but even in any other conditions, they always put up a fight. At home they are nearly unbeatable. Like that's what has been transpiring now, because October 2016 say they have not lost an ODI series at home. So they would love to, I would say, irrespective of this head to head, I think the recent, or if we consider only ODIs in Bangladesh, I think they have an edge on India, I would say. But yes, like I said, even the last match, we were ahead, means India were ahead.
So it should not be India will be under pressure, but I think again they go as favorites right now, given the way they bowled in the last game and they put pressure on Bangladesh. So let's see. Maybe India would level the series today, according to me. राइट। और इवन विघ्नेश एक और स्टैट है यहाँ पे कि बांग्लादेश हैज नेवर लॉस्ट अ होम ओडीआई सीरीज सिंस 2016। तो उसके बाद से उन्होंने अपने घर पे खेली गई कोई भी ओडीआई सीरीज नहीं हारी है और उन्होंने श्रीलंका, विंडीज जैसी टीम्स का सामना किया है। सो डू यू सी दिस एज अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया दिस टाइम? They've always been good in the ODI format. It's their format, I would say, over Tests and T20s. And it's the first time that Bangladesh have a chance to also win back-to-back ODI series at home against India. And if you see in the last 12 or 14 months, they've also won an ODI series away from home in South Africa. So they've been collecting a lot of good results. They've been in the format. They have momentum with them, and with the how they've approached the last game. Even though they might have fumbled a little bit in the middle overs, but I think Liton Das and the team will be backing themselves to go all the way and make it 2-0 this time. As with the selection process, as you told, they got in Nasum Ahmad. I'm a little surprised with that decision with going with the extra spinner. With the last surface, it had turn, it had spin and bone for the spinners. But with this time around, with the track being a little brownish in color, I think it would give batsman a little more time to play. So I was a little bit surprised with an extra spin option. Right, and there is also two changes in India playing 11. Akshar Patel is back and he replaces Shahbaz Ahmed. Kuldeep Sen was not available for the selection, so they have got Umran Malik back into the squad for the second ODI, and definitely we're going to see him on this track. Aditya, what do you think about this selection, like Akshar Patel and Umran Malik in playing 11? How is it going to be for Bangladesh this time? I think Akshar Patel was always going to come back or was always going to play in the first 11 for this series. Unfortunately, got injured, like BCCI said, and now that he's fit, he slots back again in place of Shahbaz Ahmed. I'm a little bit surprised what happened to Kuldeep Sen. Don't know if he's not available for selection after one match. But yes, Umran Malik is a good addition. He gives that variation in pace for India, because the other bowlers are around 120, 130 kph mark, but Umran Malik brings that. He hurries on the batters with his pace, and if like last time there was a little bit of bounce around in the middle of the pitch. So if there is something in it, Umran Malik will definitely hurry out the Bangladesh batters, and he's a good addition to the 11, I feel. राइट। और इसी के साथ एक बार देख लेते हैं प्लेइंग 11 किस तरीके से पैन आउट हुई है दोनों ही टीम्स की। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि वो होस्ट भी हैं और टॉस भी जीते हैं। तो हुसैन शंटो के साथ लिटन दास, इसके अलावा अनामुल हक, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्लाह, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, नसूम अहमद, इबादत हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान। और इसी के साथ अब इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करेंगे। जो चेंजेस हमने जैसे कि आपको बताए, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक। तो जैसे कि आपको हमने कॉम्बिनेशंस बताए, कुछ वैसे ही कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 में देखने को मिल रहे हैं, एंड डेफिनेटली जैसे मैच पैन आउट होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले एक बार जान लेते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसी है इस पर्टिकुलर स्टेडियम की, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस कॉम्बिनेशन के लिए। शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम, जिसमें पहला ओडीआई खेला गया था और बांग्लादेश ने जीत हासिल करी थी, उसी पिच पर वापस से अब ये दो टीमें बैक हैं। इसमें रिपोर्ट ये कहती है द पिच यूजुअली फेवर्स लो स्कोरिंग, द ग्राउंड इनिशियली सपोर्ट्स पेसर्स एंड द स्पिनर्स आल्सो गेट सपोर्ट एट द लेटर स्टेजेस ऑफ द मैच ड्यू टू वियर एंड टियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो पिच है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो सकती है इन केस की लो स्कोरिंग भी रहेगा, बट पेसर्स और स्पिनर्स को भी इक्वली मदद मिल सकती है, पेसर्स को पहले और इनिशियली स्पिनर्स को, उसके बाद में पेसर्स को। सो डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। अब एक बार नजर डाल लेते हैं माइलस्टोन्स पे जो प्लेयर्स अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच में। स्टार्ट ऑफ करेंगे रोहित शर्मा के साथ। ही नीड्स 3 sixes to complete 500 maximums in international cricket. Afterwards, KL Rahul needs 2 grabs to reach the landmark of 100 catches across formats. Then Shikhar Dhawan requires 9 fours to complete 854s in ODIs. Shakib Al Hasan is 4 sixes away from reaching 50 maximum in one day. और उसके बाद में अफीफ हुसैन requires 6 fours to get to 54s in ODIs. So अब बात करते हैं टीम्स के बारे में। तो आदित्य,
जैसे कि पिछले मैच में भी हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया की जो फील्डिंग थी, दैट वाज समथिंग जिसने बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट किया था, बिकॉज वी ऑल नो कि वो मैच इंडिया जीत सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द फील्डिंग साइड, द वे दे डिड इट, कैचेस ड्रॉप हुए, अच्छे से फील नहीं कर रहे थे, वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी लोग रविंद्र जडेजा को भी मिस कर रहे थे, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर वो वहां पे होते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है फील्ड में, और हम ये चीजें मिस आउट नहीं करते। सो हैव वी मिस्ड रविंद्र जडेजा सो फार? Yeah, definitely. Since he has got injured, we have missed Ravindra Jadeja on the field. If you remember, अगर रवि शास्त्री ने भी कहा था कि this team is not a good fielding side during Asia Cup, जो कहा था उन्होंने, और yes वही है, because one fielding effort can lift the entire side. And that's what has been missing this even in the that's what was missing even in the World Cup as well. I felt because Ravindra Jadeja is a kind of a player who can come into the side only on the basis of his fielding. But such fielding brilliance is missing. Yes, Virat Kohli is there. He took a catch. उन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया पिछले मैच में. वो इनसाइड 30 यार्ड या फिर बाउंड्री में भी जहाँ भी है उनका 100% देते. बट जैसे अगर ऐसे 2-3 प्लेयर्स रहेंगे टीम में तो बहुत अच्छा, मतलब वो दैट्स व्हाट मेक्स हेल्प्स द बॉलर्स एज वेल, एंड आल्सो इन फील्डिंग द टीम कैन सेव अराउंड 10 to 15 रन, बट दैट्स व्हाट हैज बीन नॉट बीन हैपनिंग. एंड अगर पिछले मैच की बात करें स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है इंडिया वेरंट एक्सपेक्टिंग, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग द वे मेहदी हसन मिराज वाज प्लेइंग, because when the team needs 51 runs, तो मुझे नहीं लगता किसी लास्ट विकेट ने कभी, it has happened very very rarely, so that was one of the rare occasions, and उसी की वजह से प्रेशर आया, थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे तो प्रेशर आया, तो ओवर थ्रोज गए, मिसफील्ड्स हुए. सो यंगस्टर्स है इसमें से कोई सुंदर से मिसफील्ड हुआ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद केएल राहुल, विकेट कीपिंग ग्लव्स से वो कैच मिस हुआ, बट दैट कैन हैपन आई थिंक. तो जैसे रोहित शर्मा ने टॉस पे भी कहा कि इट्स अबाउट लर्निंग, सो इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग्स व्हेन यू लूज. सो होपफुली इस मैच में फील्डिंग इंप्रूव होगी एंड इंडिया कैन पुट अप अ गुड शो एटलीस्ट. राइट, और इवन विघ्नेश, जैसे आदित्य ने यहाँ पर पुटअप किया कि जिस तरीके से बांग्लादेश की साइड ने खेला, मेहंदी हसन मिराज जैसा खेलेंगे ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह की ड्रीमी इनिंग्स खेलेंगे. बट हम यहाँ पे शाकिब अल हसन को भी थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं, सिंस उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट इंडिया इन दैट पर्टिकुलर मैच, एंड वो एक ऐसा टाइम था जिसकी वजह से इंडिया ज्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई, और हमारे जो टॉप बैट्समैन थे उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाया. तो इवन शाकिब अल हसन को हमने इटसेल्फ देखा है अपनी होम कंडीशन पे, ही इज टू डेंजरस टू रियली फेस, बिकॉज अगर हम पिछले सीरीज की भी बात करें 2015 में भी शाकिब अल हसन हैज डन वेल अगेंस्ट इंडिया. सो लाइक व्हाट हैपेंस टू हिम व्हेन ही इज प्लेइंग at home, like he is like a tough nut to crack. You really have no solution to this man. Yeah, Shakib Al Hasan has always been that backbone of Bangladesh cricket. You know, he could offer you runs. He could come at 1 down. He could come at 2 down. He could give you runs. He could also bowl sometimes in the power play when the fast bowlers are going for runs. He can also come and consolidate into the middle overs. So he's that all-round package where he's more like a Bangladesh bank, I would say, where you can always go to a bank and you can get something out of Shakib Al Hasan. So he's that role model for all Bangladesh cricketers going forward. Sometimes off the field, I would say no, but again, when he's on the field performing for Bangladesh, I think he's one of the go-to man for Bangladesh cricket, as well as the youngsters coming through the ranks, the spinners like Masood Mohammad, and a lot of domestic spinners who could look at him as a role model and also come into the side and perform as a group. राइट, और इसी के साथ एक बार देख लेते हैं प्लेयर बैटल ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच. कौन से प्लेयर्स हैं जिनके बीच की बैटल होगी काफी इंटरेस्टिंग, और देखने में मजा आएगा उनके इस कंपटीशन को. सिंस शेरे बांग्ला में है ये मैच, तो डेफिनेटली बॉलर्स और बैटर्स इक्वली यहाँ पर अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे. स्टार्ट करेंगे रोहित वर्सेस मुस्तफिजुर के साथ, जहां एक तरफ रोहित ने 115 रन बनाए हैं अगेंस्ट मुस्तफिजुर. 116 बॉल्स पे 3 बार आउट किया है मुस्तफिजुर ने रोहित को. नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ेंगे. विराट वर्सेस शाकिब. 118 रन बनाए हैं विराट कोहली ने. 125 बॉल्स पे 4 बार आउट किया है शाकिब ने विराट को, जो कि अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है. और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मैच में कैसा रहेगा. और यहाँ पे दूसरी प्लेयर बैटल है हमारे पास, धवन वर्सेस शाकिब अगेन.
30 बॉल्स पे 21 रन्स बनाए हैं शिखर ने, और 2 बार आउट किया है शाकिब अल हसन ने। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिल सकती है हमारे टॉप 3 के अगेंस्ट, वहाँ शाकिब और मुस्तफिजर की ओर से। बात करेंगे प्लेयर टू वॉच आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच, बिकॉज इस जिस कंडीशन में यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर लिटन दास काफी इफेक्टिव दिखाई पड़ सकते हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर एज वेल। हालांकि पिछला अभी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है उनको कैप्टनसी में, बट स्टिल द वे ही हैज प्लेड सो फार, सो लिटन दास को प्लेयर टू वॉच आउट बनाता है उनका इस तरह का गेम। 58 मैचेस में उन्होंने 1008 76 रन बनाए हैं 35 की एवरेज से। 176 उनका हाईएस्ट है इस फॉर्मेट में, जो उनको बनाता है प्लेयर टू वॉच आउट। अब बात करेंगे अगले प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम इंडिया साइड की, दैट इज शिखर धवन। 165 मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं 6782, और उनका एवरेज है 44 का। और डेफिनेटली इस बारे में बात करना बनता है आदित्य शिखर धवन के बारे में, बिकॉज वी ऑल नो कि ओडीआई उन्होंने इस वक्त, अगर रोहित और विराट की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा ओडीआई शिखर धवन इटसेल्फ खेले, क्योंकि यूजुअली रेस्ट पॉलिसी के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली को ज्यादा रेस्ट दे दिया जाता था और शिखर धवन जाते थे, लीड करते थे। सो इस साल में उन्होंने ज्यादा ओडीआई खेला है, बट क्या ऐसा कुछ होता है कि व्हेन इट कम्स टू द टॉप टीम तो शिखर धवन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हमेशा बी टीम के साथ उनको भेज देते हैं, बट टॉप टीम जब आते हैं, जब पूरा ट्रियो वापस होता है, तब शिखर धवन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इट्स मुझे लगता है इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि शिखर धवन के ऊपर अभी भी प्रेशर है, ऐसा बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइक रेट। क्योंकि T20 में उसी के ऊपर से उनको ड्रॉप किया गया। टेस्ट में तो पहले से ही नहीं थे वो, थोड़े उसके पहले से ही। लेकिन जब ओडीआई की बात आती है तो आई थिंक शिखर धवन इज स्टिल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स। तो यस, लास्ट 12 मंथ्स में उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट इज ऑन द डाउन साइड, इज ऑन द लोअर साइड। बट जिस तरह से उन्होंने, अगर उनका करियर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 91.42 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। यस, अभी का जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरफ जा रहा है, आई थिंक इंडिया, ही एंड रोहित शर्मा बोथ हैव टू स्टार्ट गिविंग इंडिया क्विक स्टार्ट्स, जैसे T20 में भी जरूरत है हमको। तो यस, लेकिन प्रेशर है बोलना गलत बात होगा, क्योंकि शिखर धवन एक ऐसे बल्लेबाज है जो अगर टिक गए तो वो 100 120 130 मारेंगे और वो रिकवर भी कर सकते हैं, ही कैन स्कोर क्विकली। सो आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट गेट्स गोइंग, एंड मे बी दिस और इन थर्ड ओडीआई में उनका एक अच्छा नॉक देखने को मिल सकता है विथ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। राइट, और शिखर धवन से हम एक्सपेक्ट भी ऐसे ही करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट भी है। आज हमने पिछले मैच में देखा टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं किया था हमारा, तो इस मैच में हम चाहेंगे कि हमारे जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स है वो अच्छा परफॉर्म करे। बट एक और चीज है जो क्लिक नहीं करी थी विघ्नेश लास्ट मैच में, दैट वाज इंडिया की बॉलिंग। अगर हम सिराज को वहां से हटा दे तो इसके अलावा सभी बॉलर्स लगभग क्लूलेस दिखाई पड़ रहे थे कि व्हाट टू डू, और उसके चलते रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर भी क्वेश्चन उठ रहा था कि आप कैप्टन होते हुए भी आपकी बॉलर्स क्लूलेस दिखाई पड़ रहे, उनको नहीं पता व्हाट टू डू, और वो इतने इफेक्टिव नहीं थे कि जो लास्ट विकेट जोड़ी थी, जो लास्ट पार्टनरशिप थी, वो उसे ब्रेक नहीं कर पाए, और इवेंचुअली मैच बांग्लादेश की झोली में जाकर के गिर गया। वी ऑल नो कि फील्डिंग में ब्लंडर्स हुए, बट स्टिल कई बॉलर्स भी थे जो कि जिनको समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंडियन बॉलिंग जो अभी बांग्लादेश में है फिलहाल? Yeah, I wouldn't say the whole Indian attack was clueless. Firstly, we're defending only 187. There was already pressure with 50 overs, and the part of the bowling where I felt they were not attempting was the death bowling phase. They couldn't fire a Yorker, I would say, in the last 4 overs, except for that one underage that went for a single. I think the death bowling part could have been better, and they gave away a lot of width where 50 runs, Mehdi Hassan and Mustafizur, they gave a lot of room so he could just go and attack, and a few outside edges were going outside the boundary. So there is close to 12 to 14 runs or 15 runs, and a few overthrows that costed also 2 to 3 runs. So I would say with 187, I think they did a really good job, to be fair. But after getting Bangladesh to 136 for 9 and not ending the game was the death or part of the innings was a little bit of concern. But again, I would say the Indian spinners bowled beautifully. With the new ball as well, they created the pressure. If not for the created pressure in the first half of the innings, I don't know, I wouldn't have thought Bangladesh would have faltered in the middle stages. So I think they were not clueless, but again, some part of the innings they were, they didn't know what to do. Some catches didn't go their way. Some did at the misfields. So sometimes it's your off day. Things don't go away. It's just a bad day at the office, and you just move on. I don't think it's a major concern. But yes, the death bowling part, if they could have tried a little bit of more Yorkers, some variations, a few slow balls. I know Deepak sir did try a slow ball, which was a full toss and a no ball. But again, if you could try to execute it more, I think one or two slow balls in the good length area, and Miraj going for everything. He could have probably top edged one more in the air, and it would probably
If it was KL Rahul's day, it would have gone straight into the glove. So I think it's overall it's about seeing the bigger picture going to the second ODI. But again, it's just one of those off days where I don't think again in the same track again today. I think it's going to be probably a 130, 230, 240 track. Again, it's not going to be like that 180, 190 track. But again, it's going to come good. And the bowling areas, I think they've been good but not great. So that's what is the conclusion. राइट और इवन हमें लगता है कि इंडियन बॉलिंग की अगर बात की जाए तो वी ऑल मिस्ड जसप्रीत बुमराह एज वेल बिकॉज इंजर्ड थे और जब भी डेथ बॉलिंग की बारी आती है देन वी ऑल नो कि हम कितना उनको याद करते हैं एक कमेंट आया यहाँ पर वी नीड सम मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजीज लाइक एम एस धोनी डेफिनेटली दिस मैन हैज सम स्ट्रैटेजीज जो हम सब मिस करते हैं एंड वी ऑल नो कि इफ ही इज हियर देन नथिंग टू फियर बट एक और कमेंट के बारे में बात करूंगी व्हाइल वी आर हैविंग दिस डिस्कशन विघ्नेश सो देयर वाज वन कमेंट केम इन कि Indian cricketers have played too much in foreign conditions that they forgot to play in Asian conditions now. They don't know what to do with those because that is again like if you are playing too much in the foreign conditions, then you don't know how to do it in Asian conditions. Do you also feel the same? But again, it all comes down to the scheduling and stuff, how it moves forward, you know. But again, I would say the home season is where once the Indian home season starts, a lot of bulk ODIs, bulk tests, and everything that India plays. And then people start, when they go away and lose, people just, just trash out that India just doesn't know how, and they're clueless away. So when it's vice versa, and these kind of comments come in. So I would say it's all about, coming back. That is why they're given a 12 to 2 to 3 week period where they come and settle in with the conditions and get to know the surface, get to know conditions and stuff. But again, it is about so that is why they probably play international cricket. They're versatile. So it's about adjusting the conditions, getting your game back to basics, and it's about taking the game each game at a time, and probably it's about going in phases where you start the game pacer innings and stuff. I don't think that is one of the reasons for India's loss. I think it's on that day Bangladesh were better. That is all. Right. And Aditya, what do you think about this Asian versus foreign conditions for India? So I remember during the early 2010s, we used to it used to take around 2 to 3 matches to adjust the pace adjust the pace or the conditions in away conditions. India used to struggle with the batting, but now I think in last 4 5 years, what has happened is we have been playing the pacers very well when there is swing. Actually, our batters do well, like we saw on England tour last year. Rohit Sharma got 100, KL Rahul, both openers got 100, and it was very rare that we were getting a 100-run partnership. It was also a record that we got a 100+ partnership for so many years away from India, away from home. So and when it comes to playing spin, actually it's baffling to see that in last couple of years, even Virat Kohli's stats are not so good against maybe leg spin, left arm spin. So we have seen matchups going against him. Like some teams have also opened with a leg spinner to get Virat Kohli out early. So that has been happening for the last couple of years. And also, I think India's like when they play tests at home, sorry, when they play tests at home, they have this overall quality of batting against spin has gone down. But as again, when we concentrate on one aspect, the other aspect goes down. And like Vignesh said, the scheduling has been an issue. It's a very quick turnaround between games, between tours, between series as well. So sometimes we have to feel for the players as well, both batters and bowlers. But again, it's only a matter of time. I feel with a lot of cricket to be played in the next 1 year. I think come the World Cup, even if the pitches are spinning or swinging, I think Indian team will make it better. Will be better. Will get better. राइट और इसी के साथ एक बार देख लेते हैं सोशल ट्रैकर में क्या है हमारे पास क्योंकि जो डिस्कशन हम कर रहे हैं सोशल मीडिया के भी अपने डिस्कशन होते हैं ओके सो CricTracker का यहाँ पे एक ट्वीट है यू कैन पिक ओनली वन इंग्लैंड इन ODIs इंग्लैंड इन T20Is and England in test match which one will you pick Vignesh I'll ask you and then Aditya you can give your answer which one will you pick I think I'll go with England in the white ball format. Test again. It is just they've played well, I know, but it's about on a flat track at Pindi. But they will be tested when they go to Australia or in seaming conditions Australia or also ranked turners in India. So I would probably pick the England team in white ball cricket. Aditya, your pick? I will go specifically for the format. I'll looking at them playing World Cup, recent World Cup. I would go England T20 side because they're extremely dangerous.
And apart from the game against Ireland, they were near flawless, I feel. In tests, again, they're still vulnerable. One odd win here and there. Yes, their former cricketers call it a best win. Yes, it was a very good win. Credit to Stokes for giving that bold declaration. But again, they have nothing to lose with their, as they've already ruled out of the WTC finals race. So it will be interesting to see if they do it in Ashes next year in the new WTC cycle. So it remains to be seen if they continue to play the same brand of cricket, even in Ashes, when where there's a lot at stake. Then I think we can believe them. They are in, they are one of the best in tests as well, but not right now. T20 is their T20 side is absolutely brilliant right now. And even I go with test matches because I love seeing them whenever they put up 9 members on just simple one batsman. The way they put up the field, I really love them. That competitive cricket, I really love to see in test. So definitely, I'll go with test. Let's take a look at the second tweet of this social tracker. Rohit Sharma's ODI average each year, and here we can see the decline, and maybe sometimes it's a roller coaster ride for him, Rohit Sharma, because he has started off in 2007, then he had 20 odd numbers afterwards, 2008 and 9. We can see 25. It's going to up to 38, then 55, then it goes down in 2012 by 12 average. 2013 में he has got 52, afterwards maintain किया 50 का average. 2017 में he got a boom, it was 71 and 73, फिर decline हुआ है, 50s में आए हैं, then अभी 30s में चल रहे हैं. I thought 2019 में he might have got more because he has scored 5 centuries in England in that particular World Cup, but as we can see कि average में decline तो हुआ है. तो क्या रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन उठता है? तो हमें ये ईयर भी देखने को मिल रहा है जो कि काफी डिफिकल्ट रहा है, बट ऑल वी कैन होप कि नेक्स्ट ईयर जो न्यू ईयर हो वो रोहित शर्मा के लिए एक अच्छा ईयर साबित हो. Let's take a look at the third tweet. Anyone who thinks the ODI format is in decline or needs removing from the schedule needs to watch that brilliant match between Bangladesh and India today in Mirpur. तो यहाँ पर एक साज सादिक का कहना है कि ओडीआई फॉर्मेट को जो लोग बोरिंग मानते हैं, उनको लगता है कि वो एक डिक्लाइन देख रहा है इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप, उनको इस मैच को देखना चाहिए. एंड डेफिनेटली इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच, वी ऑल लव्ड इट. बट ओडीआई की डिक्लाइन के बारे में यहाँ पर आदित्य, वी ऑल नो कि बार बार क्वेश्चन उठता आ रहा है कि T20 इज मोर इंटरेस्टिंग, इवन ओडीआई कई बार बोरिंग हो जाता है. बट वही अगर इस मैच की बात करें, और ऐसे कई सारे हमने मैचेस देखे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है? ओडीआईस के बारे में डू दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि कितने नंबर ऑफ मैचेस खिलाने चाहिए, या फिर इनफ है जो चल रहा है? Yes, the number has gone down recently because of the two T20 World Cups back to back. But जैसा कि हम देख सकते हैं कि 23 के World Cup को मद्देनजर रखते हुए lot of teams have kept ODI series in, like it is a priority given the looking at the World Cups coming, because ICC ने ऐसा schedule बनाया है कि every year ICC event होगा. तो based on that format, I think the schedule will keep changing. Yes, 23 World Cup तक there will be a lot of ODIs. T20s तो खेली जाएंगे because that is what the market has been demanding right now. But ODIs को ज़्यादा importance दिया जाएगा, main plus ODIs खेलेंगे. लेकिन what I worry about the ODI format is what after 2023, because Champions Trophy है लेकिन main World Cup तो 27 है उसके बाद. तो I think in between those 4 years, somewhere down the line, ODI format will lose its sheen. बट नहीं, एज फार एज डिक्लाइन की बात हो रही है, थोड़ा डिक्लाइन है, बट अगर इंडिया बांग्लादेश से मैचेस हो रहे हैं तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो उसके लिए बैट एंड बॉल के बीच में वो ये बैलेंस रखना जरूरी है, और ना कि फ्लैट पिचेस दे और 400-450 बनाए टीम्स. राइट. और विघ्नेश जल्दी से सम अप कर दीजिए अपना ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओडीआई फॉर्मेट? Yeah, exactly like Aditya told. There's a IPL, then again a World Cup, then again a small IPL, the IPL again, and it's a World Cup. So it was all jam-packed T20 cricket, and hence the priority was T20 cricket for even the sides as well as the boards to schedule a lot of T20 games. So the priority was T20 cricket. With the World Cup coming up in 2023 over the next 9, 10 to 12 months, I think there will be a lot of keeping away the IPL. I think there's going to be a lot of ODI games, and instead we would, I think all fans would accept with this, where we would prefer close or 230 chases instead of 350 or 360 odd runs, and hence it need the balance with the pitches and also the curators. I think curators could play a vital role in also keeping ODI format alive. So that is the राइट. और इवन मैच शुरू हो रहा है तो हमें भी अपना शो अब खत्म करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच आदित्य एंड विघ्नेश फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस डिस्कशन. विल बी बैक इन द पोस्ट मैच टू डिस्कस अबाउट द एक्शन, एंड डेफिनेटली तब तक आप बने रहिए क्रिक ट्रैकर के साथ और देखते रहिए इन द एयर शो.